अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम फातिमा बुखारी है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रिव्यू ऑफ टू प्रोडक्ट्स। एक जो सबसे पहले मैं रिव्यू कर रही हूँ, दैट इज द MPFHS वाली सतरंगी पैलेट। हाउ कूल इज दिस? इसके अंदर there's a wide variety of shades. You get mattes, आपके पास shimmers हैं, आपके पास glitters हैं, आपके पास pressed pearls भी हैं। तो आपको एक local पाकिस्तानी brand provide करिए, and the pigments are absolutely amazing. मैंने ये look इसी palette से create किया। Obviously I didn't use all of the colors, but I will be using them more into my lives. So yeah, you want to stick around for that. दूसरा product जो मैंने review किया था, that was the Glow by Gifto Art की foundation in the shade G03। इसका मैंने detailed review किया था। This foundation is love it। अगर आप ये पूरी look देखना चाहते हैं, पूरा review देखना चाहते हैं, keep on watching। सबसे पहले मैं अपने face को prime कर रही हूँ and I'm using the ये है Zara's Beauty का ये serum है and this is very nice serum। ये एक skin care का serum भी है and this is something that you can use as a primer as well। और आज मैं इसको use कर रही हूँ to prime my face। इसको आप स्किन केयर के लिए यूज़ करो और आपकी स्किन जो है इतनी मज़े की ड्यूई हो जाएगी। यहाँ पर शाइन नज़र आ रही है ना मेरी स्किन पे बिफोर आई अप्लाइड एनीथिंग। इट इज़ लिटरली बिकॉज ऑफ दिस प्राइमर, दिस सीरम एक्चुअली। क्योंकि मैंने फाउंडेशन करनी है, आई थॉट इट बी अ गुड आइडिया टू मूव माई हेयर बैक एंड व्हाट बेटर वे टू डू इट विद अदर देन अ हेयर बैंड। सो हियर वी गो। ओके, फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग ग्लो की फाउंडेशन एंड आई एम यूजिंग द शेड G03। इसका मैंने अलग से रिव्यू नहीं किया था, सो आई थॉट आई जस्ट डू इट फॉर माय यूट्यूब एज वेल। इसके मैं ले रही हूँ तकरीबन आई एम गोना बी टेकिंग अबाउट 3 to 4 pumps ऑफ दिस फाउंडेशन। ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज है, सो यू कैन यूज़ लाइक एज मच एज यू लाइक। अगर आपको ज़्यादा कवरेज पसंद है आप ज़्यादा यूज़ करोगे, अगर आपको कम कवरेज रखनी है तो आप कम यूज़ करोगे। दैट्स बेसिकली द रूल। मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माई ब्रश। ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम सिग्मा और इसको बस मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि मेरी फाउंडेशन कितनी मज़े की कवरेज इसकी लग रही है एंड इट्स ऑलरेडी लुकिंग सो शाइनी एंड ड्यूई। मेरी स्किन के अंदर अपनी एक रेडनेस है, इट इज़ लाइट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव, सो इट टर्न्स रेड वंस दिस फाउंडेशन इज ब्लेंडेड। आप खुद देख लोगे कि इट लुक्स प्रीटी डैम गुड। ब्लेंडर की मदद से आई एम ब्लेंडिंग दी फाउंडेशन आउट। मेरा ब्लेंडर जो है इट इज़ वेट। आप इसको सेटिंग स्प्रे से वेट कर सकते हो, पानी से भी वेट कर सकते हो, दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस। यू कैन ऑलरेडी सी कि कितनी मज़े की ड्यूई और शाइनी सी ग्लोई फिनिश आ रही है। लव इट। मैं यूज़ करूँगी ये फोकलोर का बिग कवर कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड 02 और आई एम बेसिकली यूजिंग दिस ब्रश सेट जो रिसेंटली मुझे आया है from OVW, ये makeupforyou.pk, it's an Instagram page मुझे वहाँ से ये आया था brush set and I'm actually reviewing this for you guys on my channel today as well. There you go. मैं basically अपनी under eyes brighten करूँगी and I'm also going to prime my lids with this. पहले हम under eyes को blend कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी lids को हम जो है prime करेंगे बाद में। को blend करना है। अब मैं पार्टी क्वीन का ये कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड दिस इज़ लाइट और इससे बेसिकली मैं अपनी लिड्स को प्राइम करूँगी एंड वंस आई एम डन प्राइमिंग द लिड्स उसके बाद मैं अपनी ब्राउज फिल करूँगी। अब मैं पेस्टल का ब्यूटी फिल्टर पाउडर यूज़ करूँगी। दिस इज़ अ कलरलेस पाउडर, ट्रांसपेरेंट इसका कलर है और ये दिस इज़ अ फाइनल टच फिक्सिंग पाउडर और इससे मैं अपनी अंडर आइज़ को जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ मैं इसको सेट करूँगी। लिड्स के टॉप के ऊपर मैंने क्योंकि यूज़ किया है मैटिफाइंग कंसीलर, सो आई डोंट एक्चुअली नीड टू यूज़ एनीथिंग टू सेट इट। ब्रश मैं ये एंगल्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ लाइक दिस और इससे मैं अपनी ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ। अब हम आते हैं उस पैलेट में जिसका बेसिकली मैं इंतजार कर रही थी टू रिव्यू एंड दिस इज द MPFHS सतरंगी पैलेट फ्रॉम उज़मा एंड तैयबा। स्टार्टिंग विद अ फ्लफी ब्रश, सबसे बड़ा ब्रश है। द शेड कॉल्ड सुंबुल, ये वाला।
इसको बेसिकली मैंने स्वीप करना है onto my lids as a base color. Now picking up an angled blending brush like this one, I'm going to pick up the shade. मैं लेने लगी हूँ. This shade is called Bukhari, ये वाला shade. पुखराज को मैं ग्रेजुअली अपनी क्रीज से ऊपर ऊपर इस एंगल्ड ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसको बिल्ड कर रही हूँ. ये जो एंगल्ड ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ OVW का, इट मेक्स योर ब्लेंडिंग सो मच ईजियर क्योंकि इसके ऊपर एक कट है. इसको आप बैकवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो और फ्रंट भी यूज़ कर सकते हो. मतलब जिसकी एंगल्ड साइड है वो अपनी आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करते करते लिड की तरफ या फिर अंदर की तरफ से बैकवर्ड्स भी ब्लेंड कर सकते हो. एंड इट रियली हेल्प्स कलर डिपॉजिट करने में बहुत हेल्प करता है और कलर बिल्ड करने में भी. ये शेड कथई इस ब्रश के ऊपर डस्टिंग ऑफ द एक्सेस. कथई को मैंने अपनी आउटर वी के ऊपर प्लेस करना है. अब फ्लैट ब्रश के ऊपर मैंने ये वाला शेड लेना है नारंगी और इसको I'm going to apply this onto my, oh my god, pigment is insane. Oh my god, बहुत ज़बरदस्त पिगमेंट है इसका. Wow, so beautiful. Look at this. This is so beautiful. इस look को थोड़ा glam करने के लिए I'm gonna add some glitter and I'm thinking I'm gonna add the color Shafaq. Look at this. Ooh, this is so beautiful. So beautiful. Wow. Tell me, is this not pretty? Tell me, is this not pretty? This is so pretty. अब मैं अपनी lower lash line complete करूँगी और इसके लिए I'm going to go into the shade गुलाल. ये मैं एक shade brush यूज़ करूँगी इसी वाला ये OVW का. Lashes जो हैं I'm using Rasam with Veena और I'm just gonna apply them off camera और मैं वापस आती हूँ. लैशेस के बाद लुक कुछ ऐसी है. अब हम करेंगे कॉन्टूर और कॉन्टूर के लिए I'm going to be using Luscious Cosmetics का कॉन्टूर किट and I do have a discount code with these guys. आप अगर मेरा नाम देते हो you get Fatima Bukhari 10. अगर मेरा कोड यूज़ करते हो you get discount as well. So yeah, I'm going to be using ये दो shades for my contour. और ये देखो कितना मज़े का अच्छा कॉन्टूर हो रहा है with this. So perfect, like just the right amount. Jawline पे ब्लश में फोकलोर का यूज़ करूँगी and I'm using ये वाला मेरे पास Venus का brush है and I'm going to be picking it up onto this. This is the B07 Tipsy blush. This is going to look perfect with this look. So pretty. Highlighter के लिए I'm using Fa Beauty by Fatma Ali and I'm going to be using the top two shades इनको mix करूँगी and I'm just going to be using it onto a फोकलोर का brush like this. और इसको मैंने apply करना है here onto the high points and you see how beautiful that is. That is so beautiful, so beautiful. Like that dewy glow. जब भी हम थोड़ा सा लगाते हैं since it's shining, why not? On the nose. Yeah, this is so pretty. This is so pretty. There we go. थोड़ा सा हम Cupid's bow पे भी लगाएंगे like this. Oh my god, that shine is everything. That shine is everything. Now normally I wouldn't wear such a bold lip color, लेकिन आज मेरा mood हो रहा है इस lip color का, तो I'm gonna be using because I'm using the eyes as a focus. ये PS की high shine lip gloss है.
फेस को सेट करने के लिए I'm spraying this. You soak in love का splash it up setting spray and you can probably see the particles flying around, but do you see my foundation finish? Oh my god. I'm loving this look. I'm loving this look. Okay, so final thoughts about this palette. Even though मैंने इसके बहुत ज़्यादा shades अभी test नहीं किए, but the mattes are really really nice and pigmented. I like the blending ability. मुझे इसकी blending ability पसंद है बहुत ज़्यादा. I feel like इसके जो shimmers हैं they're intense. वो काफ़ी intense है. मेरी इतनी expectation नहीं थी कि इतना intense होगा for a Pakistani brand, but it's really really good. I'm glad इन्होंने एक black भी बीच में डाला कि अगर आपने अपनी eyes को जितना मर्जी intense करना हो कर लो. Color range इनकी अच्छी है. मतलब you do have a nice variety of colors. They're not super neon kind of colors. अगर आपको neon किस्म के shades पसंद है उस तरह के नहीं हैं, but colors हैं enough कि आपकी जो color craving है वो satisfy हो जाएगी. So that's that. जो pressed pearls हैं, these are absolutely beautiful. Even though I only used one shimmer today and a glitter. The glitter is so bomb. It is like जिस तरह आपकी हुदा ब्यूटी की पैलेट के अंदर ग्लिटर होते हैं उस तरह के इसके ग्लिटर्स हैं. सो आई एम काइंड ऑफ लाइक really happy कि बड़ी अच्छी पैलेट इन्होंने निकाली. एंड आई थिंक कि अगर इफ़ यू डोंट वांट टू बाय एनीथिंग एल्स बाय वन ऑफ दीज पैलेट्स, दिस इज really good. Super pigmented palette. और ये एक लुक मैंने इससे क्रिएट किया. आई एम सो हैप्पी विद दिस. सो हैप्पी. इट्स सो ईजी टू क्रिएट. मैंने कोई कट क्रीज कुछ नहीं किया. Just use the right kind of brushes and just get this palette. This is super good. Super good. I love this. Fatima Bukhari approved, I would say. Okay, so moving on to the foundation, and I'm losing sunlight, so you will probably see a difference in lighting. So, yearly foundation jo hai, this is becoming one of my holy grail foundations to use. I absolutely love it. एक तो this is perfect. अच्छा, एक चीज़ मैं बताती फिरूँ. मुझे बहुत questions आते हैं इस चीज़ के बारे में कि is this suitable for all skin types? No, it is not suitable for all skin types. अगर आपकी skin oily है, this is not for you. This is suitable for normal, dry, combination skin type, sensitive skin वाले भी use करते हैं. I have hypersensitive skin, मुझे ये suit करती है. So yeah, this is a really affordable foundation. I think this is in the $12.50 range. And if you give them my name, आपको free goodies मिल जाते हैं with every order or something like that. This is a must have. This is a must have. एक ये और एक इनका beauty blender जो Defender आता है, वो दोनों चीज़ें they're ज़बरदस्त. इनका जो blender है, it's kind of dirty, so I didn't actually use it today. लेकिन उसमें मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया. ये marble like वाला है. इसका texture बिल्कुल Real Techniques के blender की तरह है. So I have the Real Techniques वाला as well. This works just like it. So if you can get a local product, अगर आपको local brand में Real Techniques वाली क्वालिटी मिल रही है, और अगर आपको ये फाउंडेशन को मैं कंपेयर अगर करूँगी तो आई वुड कंपेयर दिस विद द बॉडी शॉप की जो फाउंडेशन है उससे मैं कंपेयर करूँगी. बिकॉज आई फील लाइक कि ये उससे बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मिलता है. और इसकी कवरेज भी ऐसी ही है, मीडियम टू बिल्कुल है. मतलब आप इसको अप्लाई थिन कर लो अगर आपकी इतने कोई ब्लेमिशेस वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आपके हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करके आपकी जो फिनिश है इट बिकम्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. या So yeah, with that being said, we're at the end of this video. I hope आप लोगों को ये tutorial पसंद आया होगा. And if you did, don't forget to give me a thumbs up. And if you are new, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चल सके मेरे नेक्स्ट वीडियोस कब आ रहे हैं. With that being said, much love. Allah Hafiz.